हाय, गुड इवनिंग. हाउ इज दिस ब्रिलियंट फ्राइडे इवनिंग ट्रीटिंग यू? हम लोग बात करने वाले हैं CUET के पेपर के बारे में, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का पेपर. व्हाट इज CUET, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है? इंटरेस्टिंगली जेई मेन से ज़्यादा सिलेबस है CUET का. जेई मेन और नीट का सिलेबस सेम है. सो मेरा आइडिया था कि देखिए, आई नो दैट द फोकस ऑफ एवरी स्टूडेंट इज़ टू गो टू IIT बॉम्बे CSE, बट कुछ लोग और भी चीज़ें चाहते हैं. कुछ लोग चाहते हैं कि बाकी एग्ज़ाम लिखें, लाइक CUET, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है. शो यू द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस. उसके अलावा और भी एग्जाम्स है, कॉमेट के है, MHT CET है, लॉट ऑफ ऑल इंडिया एग्जाम्स दैट यू गाइज हैव टोल्ड मी दैट यू वांट मी टू मेक सोल्यूशंस ऑफ पेपर्स के बारे में. अब किसके लिए यूजफुल है? अगर आप ऑलरेडी जस्ट अभी पेपर दे चुके हो CUET का, तब भी आप देख सकते हो, बिकॉज यू आई एम श्योर यू हैव मेनी मोर एग्जाम्स कमिंग अप. आप लोग ढेर सारे एग्जाम देखते हो, स्पेशली द जेई क्राउड, राइट? ऑल्सो IIT आने वाला है. आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, IIT और CUET का बिल्कुल ही अलग प्रिपरेशन है, बट मे बी हम लोग उसका भी डिस्कस करेंगे. सो दैट्स व्हाट द डील इज. ओके, मैंने अपनी टीम से बात की एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल बिग एग्जाम्स अदर देन जेई ऑल्सो ऑन द जेई चैनल. एंड जो बायो स्पेसिफिक है वो हम लोग नीट चैनल पे करेंगे, ठीक है? तो इफ़ यू हैव सच इनपुट्स और आप चाहते हैं कि हम लोग ये एग्जाम का सॉल्व करें, सेंड मी द पेपर, आई विल हैप्पीली सॉल्व इट. या यू नो वेयर टू रीच मी, राइट? I teach chem, that's me everywhere on Telegram, Discord and all that. Shall we get started? आज का फोकस है CUET के सारे 50 सवाल सॉल्व करना. हरे कृष्ण ऋषभ, स्निग्धा, गुड इवनिंग. दिल चाहता है, ओके ओके. हे हरे कृष्ण स्निग्धा, हाउ यू डूइंग? ऑसम टू सी यू गाइस हियर. सो शुरू किया जाए. दिस इज सम वियर्ड AI जनरेटेड इमेज बिहाइंड मी. या आई हैव नो आइडिया व्हाई दैट इज. हे होल्ड ऑन, व्हाट इज दिस एट द बॉटम? व्हाई इज इट शोइंग दैट? आई हैव नो आइडिया व्हाई इट शोइंग दैट होल थिंग. Hey, Jai Hari ji, pranam. So, okay, what was the CUET exam like? This is it. This is bugging me. I want to get rid of that at the bottom. Let me figure out how to do that. Okay, we'll do that. But what was the CUET exam like, right? This was a split. पहली बात, I'll show you in a minute कि CUET exam what is it about, right? मैं उस बारे में बात करूँगा ज़रूर. पहले CUET में 50 में से आपको 40 सवाल आंसर करने हैं. एंड मेरे हिसाब से, एंड मे बी हो सकता है मेरे से 1-2 सवाल मिस हो गए हो, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम NCERT. सो इट्स अप्रॉक्सिमेटली 23 आउट ऑफ 50 दैट वर डायरेक्टली फ्रॉम NCERT. एंड रिमेंबर, आपको सिर्फ 40 सवाल ही करने हैं. ओके, ओनली 40 आउट ऑफ 50 हैव टू बी डन. सो यू डोंट हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस. ओके, सो इट्स लॉट ऑफ चॉइस. अगर आप चाहो, अगर आप NCERT बहुत माहिर हैं, आप पढ़ चुके हैं, यू विल गेट ऑल ऑफ दीज एंड मे बी, आई डोंट नो, डिच 10 ऑफ दीज एंड डू इट रियली क्विकली. देखो, टाइम इज ऑफ एसेंस. ओके, 40 क्वेश्चंस इन 1 आवर आपको करने हैं. 1 घंटे का टाइम है, राइट? एम आई सेइंग दिस करेक्टली? 1 आवर, या? गुड इवनिंग पीयूष जी, प्रणाम, हाउ यू डूइंग? या प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस, ओके, बिकॉज इवन आई एम न्यू टू दिस होल CUET ब्रिगेड. एंड मैं लास्ट ईयर मुझे पता चला कि द एग्जाम एग्जिस्ट एंड इट्स गॉट सम वंडरफुल यूनिवर्सिटी. सो लेट्स लुक एट दैट. जस्ट विल टेक 2-3 मिनट्स टू गो. CUET है क्या चीज? काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिनको मालूम ही नहीं होगा. आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सो दिस इज व्हाट इज राइट. ये NTA का ब्रोशर है ऑन CUET. लेट मी क्विकली गेट टू दैट. कहाँ गए ब्रोशर भाई साहब? वो काफ़ी ढेर सारी चीज़ें खुली हुई हैं. ओके, दिस इज द NTA ब्रोशर ऑन CUET. So I'm not going to spend too much time. It's a 45-page brochure. Primarily look at the awesome universities here. There's AMU, there's Banaras Hindu University. Lot of big names here, yeah. JMI, JNU, बहुत भारी Indira Gandhi. Actually, I don't know this. I thought it was IGNOU की बात हो रही थी. खैर, State University, Central University of Kerala, Central University of Kashmir, Rajasthan, Tamil Nadu, Odisha, Punjab. So lot of important colleges on this list. ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं. This is where you may want to look at it. And there are a lot of exams. Okay, आपको कुल मिला के कुछ पेपर देने होते हैं, out of which I'm not going to solid state is in the syllabus. But when you see the question इतना straightforward था कि you can afford to just read NCERT and do this. Solutions है, electrochem है, kinetics है, surface chemistry, another thing जो JEE main में नहीं है, but it's there in CUET. देखो, general principles process, metallurgy, this is also there. P block भी लगता है पूरा है, group 15 है, group 16 है. Where is 13 and 14? Interesting, we'll look at that. So maybe group 13-14 नहीं है. Looks to me like it's primary 12th grade का syllabus. Looks to me like it's primary 12th grade का syllabus. Okay, yeah, look at that. That's interesting. So this CUET, it looks like सिर्फ 12th grade का syllabus है. What do you think? Is that it? हाँ यार, थर्मो और इक्विलिब्रियम के सवाल नहीं थे. So looks like life is easier, हाँ. सिर्फ 12th grade के syllabus से हम लोग उसको figure out कर सकते हैं. So it's a little bit extra and also काफ़ी चीज़ें नहीं हैं. Yeah. Some portion got lost in between. Lag हुआ था. Oh, that's weird. JEE में 14 लाख students. Hey, chemophile, what's happening? दीपक गायकवाड़ी, fast. अभी शुरू किया भाई, क्या fast?
चिल, यू आर हियर, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। क्या फास्ट भाई, तुम रुक जाना, 5 मिनट बाद आना, तुमको फास्ट चाहिए तो हम कुछ हर जल्दी में नहीं करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंगली दीज आइडियाज, इस पे भी सवाल आए थे। ओके, एंड देखो एनसीईआरटी को छान के पूरा करो एंड यू विल डू रियली वेल इन दिस। यू कैन गेट 200 और 200 इन केमिस्ट्री इफ यू जस्ट रीड एनसीईआरटी। 12th ग्रेड का एनसीईआरटी पढ़ना है प्राइमरी। बट कुछ चीजें, एक सवाल मुझे दिखा जो एनसीईआरटी से नहीं था, जस्ट एक सवाल, 2 सवाल एक्चुअली, 2 सवाल तो वो दोनों स्किप कर देना, सिंपल है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल पेपर, ठीक है? या ऑलराइट, here we go. Okay, we are done with a brief idea of what the exam was like. Let's start with the questions and you have to help me here. This is where आपको you have to keep this interactive. जल्दी से आंसर देते रहिए, 5-10 सेकंड में सारे सवाल करने वाले हैं, ठीक है? But this is what becomes interesting, right? आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्लोरीन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, yet it is ortho and para-directing, ठीक है? This is a straightforward thing, right? What is that? That's very cool. But there was a thumbs thing next to me. How did that come there? That was hilarious. Where did that come from? Is that a new feature of YouTube? That's lovely. Here, anyway. Oh, if I do this, it does that? No way. This is not some AI thing, right? What was that? Did you guys see that? Anyway. Oh, that was just my OBS thing. YouTube features? Really? Okay. That's freaky. No, that's not possible. Okay, that's new. Anyway, ignore all of that. I'm going to have to get used to new things to ignore. Okay. Here. Yeah, you got these 4 things, but हमको जो आंसर्स पिक करने हैं, they could have more than one correct option. Okay, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस देखे जाएं, रुकिए 1 सेकेंड, इसमें से एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, बट आप मुझे बताइए आपके हिसाब से इनमें से कौन से करेक्ट, विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस। कैन यू टेल मी विच ऑफ दीज डू यू थिंक इज गोइंग टू बी करेक्ट विदाउट लुकिंग एनी ऑप्शंस? क्या आप मुझे बता सकते हैं, या आपको लगता है ऑप्शन की जरूरत है, बिना ऑप्शन के कर ही नहीं सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? हेल्प मी विद दिस प्लीज, बताइए। थोड़ा इनपुट्स मुझे दीजिए, देन आई विल शो यू द ऑप्शन, डोंट वरी अबाउट द ऑप्शन, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसमें बोल रहा है कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, कौन से सही हो सकते हैं? दैट्स ऑल इट इज डूइंग, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड और फंकी। हियर वी गो, आंसर्स बताइए दोस्तों, कीप दिस इंटरेक्टिव। या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात हो रही है, यू शुड नो दिस, यू हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स, दिस इज लाइक डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। इफ यू वांट द ऑप्शंस, हियर दे आर, ओके? You can have A, B and D, only A, B and C, A, C and D, B, C and D. Basically 3 आपको पिक करने हैं, which makes it a little bit complicated. Okay, so if you are not so sure about it, please skip it. It looks like we are sure that electrons को pull करता है chlorine. Okay, pull करता है, great. Destabilizes the carbon intermediate? No. I think it does. That doesn't make sense, but we'll see. Accepts electrons, releases. So out of these 2, only one is correct. Either C or D is correct. Okay. Now looking at the options, it's either A, B and C or A, B and D. Okay, look at that, A, B or C या फिर A, B and D. That's what it looks like to me. खैर, आप जाके इसको आप आराम से देख भी सकते हो. You can go right here on this as well. Okay, this is directly from NCERT. मैंने बताया ना कुछ चीज़ें डायरेक्टली NCERT, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, बट ये जो है इलेक्ट्रॉन्स खींचता भी है. ओके, माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, एंड इट हैज लोन पेयर, तो रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट भी करता है, दोनों चीजें करता है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए, बी एंड डी. मेन चीज है कि यू हैव टू एलिमिनेट वन आउट ऑफ दीज टू. दैट्स द की टू फिगरिंग आउट दिस क्वेश्चन. डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस. Okay, this is the answer. Let's move on to the next question right here. Okay, direct NCERT सवाल, but it's a little tricky. I'm not saying it's very easy because आपको 3 चीजें पकड़नी थी वहां पे. It's not a simple MCQ, but this one is direct. And ETAR reaction क्या होता है final product? But because it's direct, it also can get difficult. Like, what is ETAR reaction? Who knows what is ETAR reaction? Right? Yeah, absolutely. Snigdha, bilkul. Rushabh, absolutely right. Aromatic aldehyde. Yeah, Rushabh is a pro at chemistry. He's awesome at this. He's got this figured out. Exactly जो ऋषभ ने बोला. That's all the answer is, right? You need to just know this. Some name reactions ज़रूरी हैं CUET के लिए. Looks like the most interesting thing to me, and I'm still trying to wrap my head around it. It's only 12th का syllabus. Yeah, that's only 12th का syllabus. So no atomic structure, no thermodynamics. भारी चीज़ें नहीं हैं. Okay, all right, great. Aromatic aldehyde was the answer. Absolutely right. Next question. ये सवाल JEE main में भी आया था. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction because what? But I'll tell you the main difference between this and जो आया था आपके JEE main में. JEE main में you had one answer correct. That's it. Okay. कुछ ज़्यादा effort नहीं लगाना था. But again, once again, इसमें यहाँ पे things get interesting. Things get interesting because you have to pick more than one correct. What do I mean? देखो आपके options यहाँ पे. Hold on. I'm gonna pop the options back up on your screen. कहाँ गए? Here we are. Look at this. So you got four things, but again
It's a set of three things that are correct. Look at this, A, B, D, A, B, C, A, C, D. So तीन statement फिर से सही है. So in a way, सोचा जाए तो what you have to do is you have to identify the incorrect statement, right? If you do that, you're sorted. If you figure out the incorrect one, you can do this. तो थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है? But ये सब, this is not very complicated. We don't have to do all of that. Yes, this is correct. Okay, it does form a salt with Lewis acid. Exactly. AlCl3 और NH2 जो है, this becomes NH2 plus and AlCl3 minus, etc. ये सब they form this thing. Okay, great. Nitrogen aniline requires a negative charge. No, this one's wrong. खत्म हो गया. A, C and D is the answer. So if you identify the incorrect statement, you've got the answer. That's how you deal with questions like this. Hey Nidhi, long time. Yeah. सिंगधार, दीपक जी कहाँ गए? आप बोल रहे थे फास्ट बट आप तो स्लो हो गए. वेयर आर यू एट? CUET 26 lakhs, Rushabh? Wow, bro, I did not know that. Thank you. Every day we learn something new. 26 lakhs. So looks like if B is not going to be in the mix, by the way, I've got all of these things. The only option यहाँ पे B नहीं है, C. But let's see, ये भी NCERT में है, right? Directly NCERT में दिया हुआ है. Nitrogen gets a positive charge and because उसको deactivate कर देता है रिंग को, तो रिएक्शन प्रेफर नहीं करेगा. इट विल नॉट प्रेफर टू हैव अ रिएक्शन. नाउ रीजन मैं बार बार आपको एनसीईआरटी स्निप दिखा रहा हूँ इज टू गिव यू कॉन्फिडेंस दैट ऑल यू नीड टू डू इज रीड एनसीईआरटी, राइट? स्टूडेंट्स डू 10 थिंग्स, लाइक इस टीचर के पीछे भागते, उस टीचर के पीछे भागते, इस मॉड्यूल वो मॉड्यूल, ठीक है, बट पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो आप. फर्स्ट थिंग एनसीईआरटी. एंड इट बैफल्स मी, इट ऑनेस्टली बैफल्स मी कि हाउ मेनी पीपल स्टिल थिंक कि बिना एनसीईआरटी के एग्जाम क्लियर हो जाएगा. Why? It's the easiest thing is right in front of you. So please read NCERT. I'm sure that all of these things जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बाकी बहुत अच्छे मेधावी टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे. For sure, they'll teach you all these awesome things. But that's secondary. पहली चीज़ बुक पढ़िए, ठीक है? This is wrong. I've showed you how, right? It's an acid-base reaction. This behaves as acid, that behaves as a base. So it gets a positive charge, not a negative charge. And again, just out of these two, you have to figure out which one is correct. And if you do that, you've got the answers. ठीक है? ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल आए थे CUET में, इसी टाइप की चीजें. ऑल्सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट केम वर दिस. देखो, मैच द फॉलोइंग आए, बट मैच द फॉलोइंग में भी वही होता है, वो एक स्कैम वाली ट्रिक ना. फिगर आउट कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है परफेक्टली, यू नो फॉर श्योर, एंड गो हेड विद दैट. बट दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट विदाउट दैट. देखो, फाइब्रस प्रोटीन्स, हैव यू एवर हर्ड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स? एक लाइन एनसीईआरटी में कहीं छुपी हुई हो. ओके, फाइब्रस मतलब पता नहीं क्या है. अमीनो एसिड लिखिस स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस लुक्स लाइक इट शुड बी प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस लुक्स लाइक अ डेफिनेशन इटसेल्फ, ये मुझे याद है. रेगुलर फोल्डिंग ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा देखना पड़ेगा. स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेंज. ओके, पॉलीपेप्टाइड लुक्स लाइक दिस शुड बी क्वाटरनरी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी. दिस इज जस्ट माई आइडिया, बट अगेन लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. A1 कहां पे है? A1 तीनों में है. सो ऑल आई कैन डू इज आई कैन रिमूव दिस. अब आगे क्या करें? A1D3. ओके, गुड जॉब सिंगदा. सो A1D3, हाँ देखो मुझे भी यही लगा, ये दोनों मुझे आसान लगे, बाकी बीच वाले मुझे खुद मुश्किल लग रहे हैं. बट कैन वी गेट द आंसर विद दैट? A1D3 देखते हैं. नॉट तुक्काबाजी नहीं है, वी डूइंग दिस. आज लुको, लुक देखो, लुक D3, देयर यू गो, A1D3. जस्ट विद दैट वी हैव डिसाइफर्ड द आंसर. और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मत समझो कि CUET का एग्जाम मुश्किल है. इट सीम्स लाइक एट फर्स्ट ग्लांस थोड़ा मुश्किल है, बट 4 में से 2 ही आप सॉल्व कर लो, हो जाएगा. इफ यू वांट ऑल 4 ऑफ देम, पूरा एनसीईआरटी में देखो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में है फाइब्रस और ग्लोब्यूलर, ठीक है? येलो पे दिखेगा नहीं, बट या दैट्स व्हाट दिस इज. ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर का तो हम लोग डेफिनेशन जानते ही हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में था पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH ग्रुप्स, ठीक है? सो दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. एंड व्हेन यू डू दिस, वही चीज जो हमने आइडेंटिफाई की थी, दैट इटसेल्फ गिव्स यू द आंसर, ठीक है? विच वॉज कौन सा वाला ऑप्शन? ये वाला, दिस वन राइट हियर, राइट? ओके, एक्सलेंट. आगे बढ़ा जाए. यस, ऑसम. लुक्स लाइक ऋषभ गेटिंग रियली गुड स्कोर इन केमिस्ट्री, गेटिंग ऑल ऑफ देम राइट. बढ़िया. सो इफ आई ट्राई एंड मैच दिस लिस्ट, अगेन थियोरेटिकल सवाल अगर आपने पढ़ा है लाइफ में तो बहुत आसान होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो यू बी लाइक ब्रो हाउ डू आई डू दिस? लाइक व्हाट इज जोन्स रिएजेंट नाउ? जोन्स रिएजेंट क्या होता है? लूकस रिएजेंट है, नो बॉस. लूकस रिएजेंट वो अल्कोहल्स का टेस्ट होता है ना. अल्कोहल का टेस्ट में वो टर्शरी अल्कोहल के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है, पहले के साथ ऑलमोस्ट नहीं होता है. दैट इज ZnCl2. ओके, नाउ फेलिंग्स और टॉलिंग्स के बीच में एक में अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट. अब कौन सा वाला है? सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा है? इज इट फेलिंग्स, इज इट टॉलिंग्स, इज इट फेलिंग्स, इज इट टॉलिंग्स? इफ यू फिगर दैट आउट, यू आर मोर और लेस सॉर्टेड. ओके, A3C2 D1B4 ऑप्शन सी. ओके, ऑसम. क्या करेंगे यहाँ पे? लूकस रिएजेंट इज ZnCl2. ओके, टॉलिंस या फेलिंग्स? आई थिंक हल्का सा याद आ रहा है कि टॉलिंस शायद सिल्वर मिरर टेस्ट था, हल्का सा. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस.
C2 से आंसर मिल सकता है क्या, देखते हैं। C2 से आंसर मिल सकता है। अरे वी आर वेरी लकी, लुक्स लाइक C2 से आंसर मिल जाएगा। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ठीक है, मुझे बस इतना, आई वॉज श्योर अबाउट लूकस रिएजेंट्स, बट बाकी मुझे खुद बैठ के देखना पड़ा। ओके, आई हैड टू चेक कि टॉलेंस और फेलिंग्स में कौन सा था, राइट, नाम अगर से याद करो, बट इफ यू हैव डन इट इन द लैब यू नो फॉर श्योर कि टॉलेंस इज दैट सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, रोशेल सॉल्ट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। टॉलेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सिल्वर कैटायन कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट्स में लिखा है क्यूपरिक आयॉन्स कॉम्प्लेक्स विद टार्टरेट एंड सिट्रेट आयॉन्स रिस्पेक्टिवली, बट लास्टली लिखा है यहां पे देखो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है फेलिंग सोल्यूशन बी में, ठीक है। अगेन दिस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, वेयर फ्रॉम एनसीईआरटी, ये है लैब मैनुअल से, दिस इज फ्रॉम द लैब मैनुअल एज फार एज आई नो, ठीक है, मैंने एनसीईआरटी में ढूंढा ऑनलाइन, आई फाउंड दिस। ओके, कूल, ग्रेट। सो रोशेल सॉल्ट इज फेलिंग एंड टॉलेंस इज, टॉलेंस कहाँ गया, टॉलेंस इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। एनीवे, लुक्स लाइक वी फिगर्ड द आंसर आउट जस्ट विद ZnCl2, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। आदित्य भाई मुझे भी हेलो बोलो, सवाल करो, हेलो बोलने से क्या होगा, हाय हेलो करने हो यहाँ पे। हाँ ऋषभ, गुड जॉब। A4 B3 C2 D1, लेट्स चेक दैट एक बार फिर से। हाउ इज द लो लेटेंसी मोड बाय द वे, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन दिस सीन दैट वी आर ट्राइंग आउट राइट नाउ। सो ओके, नाउ दिस अगेन इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, दिस इज ईजी, ये वाला मुश्किल नहीं है, ये वाला डायरेक्ट है, बट यू नीड टू नो ऑल द नेम रिएक्शन, ये चारों का नाम आपको जानना पड़ेगा। प्रणाम सुकुमार जी, hey, looks like there's a teacher among us. Welcome, Sukumar ji. So, in चारों में से, see, you have to know some reactions, and all of these are from haloalkanes. These are the only 4 name reactions. If you don't know anything else, please यार, Woods तो you need to know कि is this. That's all. उससे आंसर मिलेगा, D2 से मिलेगा क्या आंसर, देखते हैं। अरे देखो, look at how lucky we are. I am not even kidding. The easiest one, pick the easiest one, and luckily it works out. So CUET कर सकते हैं हम लोग। प्रणाम आदित्य जी, प्रणाम रक्षित। C1 D2 A3 B4, ओके, A3 B4 C1 D2, हाँ, जिसको जो आसान लगे वो कर सकता है। सी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, दिस ब्यूटीफुल, राइट। सिंधा रक्षित गिविंग अस डिफरेंट थिंग्स, दैट्स द ब्यूटी अबाउट CUET, जिसको जो कंफर्टेबल लगे उससे कर लो। मुझे सबसे आसान लगा यार, मुझे वुड्स तो याद है, ठीक है, वुड्स फिटिंग कुछ अलग होता है, RI के लिए होता है, वुड्स होता है नॉर्मल RX के लिए, 2 मोल दे देता है, राइट। हमने कितने सवाल किए, हेलो एल्केन्स पे पूरा चैप्टर किया है, राइट। इफ यू वांट टू सी दोस, बाय द वे, इट इज, या, लुक राइट हियर, perfect, https://bento.me/it-chem. You can find my sessions on whatever I'm working on this right here. It's also in the description of this video. You want to go check it out. Let me go back to my, yes, okay, woods, yeah, dry ether के साथ हमको देता है 2 moles of NaX plus RR, yeah, doubled basically. Okay, cool. Interestingly, if I have R1 and R2, then I get multiple combinations. Okay, JEE main में ऐसा सवाल भी आया था कि JEE main में आया था, कहाँ पे आया था? No, I think it was in one of our practice sessions. JEE main बहुत आसान था यार, I think NEET में शायद आया था वो. Anyway, D is the answer. Sandmeyer reaction, popular reaction, you get N2 plus and then finally you get back to an aryl halide. Yeah, all questions are from haloalkanes. ये दोनों थोड़े याद करने वाली चीज़ें, अब क्या करें। Finkelstein and Schwartz में is for iodine and fluoride specifically, yeah, fluoride और iodide बनाने के लिए, RI not fluoride sorry, RI and RF specifically बनाने के लिए एक बंदे ने, Finkelstein ने ये बोला, Schwartz ने बोला, everybody gets credit. Look at that, they spent their whole life making RI. Scientists, right? Anyway, the answer to this was D. We figured it out with an easy one right there. Okay, next वाला. अब ये वाला है भारी. You either know this or you don't. There is no way around this. Okay, no way whatsoever. So I would say this is the first question you may consider skipping. Consider. But अगर आपको मालूम है, it could also be an easy one. Okay. विटामिन A, वो आंख वाली गाजर वाली चीज होती है ना, बग्स बनी वाली चीज, जीरोफ्थैल्मिया. थैल्मिया हैज टू डू विद ऑफ्थैल्मिया, राइट? यू नो ऑफ्थैल्मिया मतलब आंख का चीज, राइट? So which is why I can guess A2. I'm being very shameless here. I'm not so sure. Estradiol, this is menstrual cycle. Yeah, this is the hormone, right? For women, all right. I think that one works. I think these two work. Baki, I'm not sure. Okay, so A2 and D1. Do you think with that we can get the answer? देख लो सारे यहाँ पे लिखा है, ये है पूरी लिस्ट आपके चैप्टर से, केमिस्ट्री लाइफ एंड ऑल दैट. ऋषभ, ओके ऋषभ, सी दैट मेक्स सो मच मोर सेंस. ओ लाइक ऋषभ देव, द भगवान के अवतार, राइट? ओके, आई गेट इट. या ऋषभ,
Estradiol, yeah, exactly. Yes, Rishabh, absolutely right. So estradiol and also ophthalmia, right? Ophthalmia, that's how I would go with it. If you know thiamine, you do this. But look at the options. मैंने options आपको नहीं दिखाए ना, देख लीजिए आप. Okay, can we go back to the question one more time? So D1, with D1 we can strike off two options, I think. D1 से हम लोग इन दोनों को हटा सकते हैं. ठीक है, D1 and A2. D1 A2. Oh, with that we've got the answer. Yeah, option D. उससे भी मिल गया. Yeah. Yes, absolutely, Rishabh. Yeah, Rishabh Dev. I have a good friend. I mean, I like to call him a friend. He runs a store called Jodhpur Sweets here. It's one of the best mithai ki dukaan in Bangalore. Yeah, he's made the finest khajur ki barfis I've ever had in Bangalore. The only better ones have been in Baroda. So yeah, Rishabh is a friend that I have here. In the following table, match the reactants given in list 1 with correct product in list 2 as per the reaction of hydration of alkene under acidic condition. अब ऑर्गेनिक के डायग्राम देख के डर लग सकता है, बट लिटरली इसको सॉल्व करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड दिस इज अ डिसअपॉइंटिंग क्वेश्चन. Okay, this is an unskippable question. I mean, you should never, even if you don't know any organic chemistry, you don't know anything, this is one of those questions you must do. Okay, क्योंकि all you have to do is count the number of carbon atoms and you will solve this question. ठीक है, I'm not even kidding. I mean, options देखने हम लोग देख सकते हैं, but look at this. This is obviously going to give this, like D is going to give 3, right? And और क्या होगा? देखो, this is C is 4. चलो with these two, let's see if we can get the answer. D2 C4. C4 हो गया आंसर. D2 नहीं, D3 बोला था. हाँ, ठीक है यार, हो गया आंसर. सी उसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है. If you want, we can go ahead and talk about the actual this thing. Yeah, acidic conditions में more substituted पे जाएगा, that is fine. OH goes into the more substituted carbon, which is what is happening all these places. See, more substituted carbon, इसलिए यहाँ पे OH add हो गया, right, with the yellow thing. I can change the color and go on to maybe this reddish thing to go to here. It is at this point, which is more substituted. ठीक है. So that is the logic, Markovnikov rules and all of that. But हमको वो सब की जरूरत ही नहीं थी. Here you just have to count the number of carbon atoms and you get the answer. ठीक है. It's an interesting paper. It's designed to be easy. I see that. और आपको जल्दी जल्दी करना है. It's a lot like NEET, but थोड़ा सा अलग भी NEET से. I'll show you. I'll tell you why it's थोड़ा सा अलग. Because the questions are very direct, but बहुत अलग अलग टाइप के सवाल हैं. I'll tell you what I mean. Yeah. Like पहले हमने देखे थे. We saw some questions that had kind of more than one correct, like 2-3 स्टेट वाले. Then we saw some match the following. Those are the two broad kind of questions till now. Right. अगला सवाल क्या है देखते हैं. अब देखो. This is a direct question. Very easy question. Which among the following is not an analgesic? Morphine, heroin, codeine. All of these three have been given at some points in time in the past to ease pain. Morphine तो आजकल भी दिया जाता है, right? The other things, codeine, rare case, heroin, nobody gives heroin for anything. I don't think heroin is given because it's very addictive. So they don't give that these days. Not that I know of. If there are any doctors, then please chime in and let me know. Yeah. ऋषभ, दोनों चिकपेट इज द ओरिजिनल वन एंड जयनगर वाला ब्रांच है. दीपक जी आप हैं, वेरी नाइस. रैनिटिडीन, एग्जैक्टली. अगर आपको कभी भी लाइफ में बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए हो एंड इफ यू टेकन एंटीबायोटिक एंड यू टेल द डॉक्टर मेरा पेट खराब होता है एंटीबायोटिक से, वो आपको रैनिटिडीन देते हैं. आई एम नॉट डूइंग आई एम पब्लिसिटी फॉर दिस ड्रग, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, दे गिव यू रैनिटिडीन. एंड अगर गलती से आपको एंटीबायोटिक खाना पड़े देन दिस इज अ वेरी नाइस थिंग टू गेट. Although it does mess up your stomach a little bit, but at least it helps with, acidity, mainly that. Khair, you've got morphine, heroin and codeine के structures and all of these are pain relievants. Yeah. I think for अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तब maybe this is administered, but I don't know of a medical place where they do this. Morphine is given, codeine is given. There's a thing called Vicodin that is given in chronic pain as well. Same drug base है. खैर, yeah, it's an antacid for stomach, ranitidine. Rantac भी बोलते हैं, that's the brand name I think for one of the medicines. Oh, finally, organic का थोड़ा सवाल है जिसमें थोड़ा एफर्ट लाना पड़ेगा. But the funny thing is, I think ये भी डायरेक्टली NCERT से है. मुझे लग रहा है NCERT का सॉल्ट एग्जाम्पल है इनफैक्ट, और शायद आई थिंक while teaching they have done this question. pKa values, ठीक है, थोड़ा सा उन लोगों ने ट्विस्ट कर दिया है, the increasing order of acidity, but ये लिख दिया तो फिर then it becomes easy. If they did not write this, we would have to think a little bit. Based on pKa values. Increasing order of acidity. Increasing order of acidity का मतलब क्या हुआ?
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मतलब कि पीके वैल्यूज कम होती जाती हैं, राइट? दैट इज व्हाट दैट मीन्स, बिकॉज पीके ऑफ 10 इज फिनॉल, राइट? दैट्स नॉट वेरी एसिडिक. पीके ऑफ 3, oh that's crazy, that's pretty acidic, राइट? हाँ, और ये सब के 5 के आसपास होंगे, 4-5 के आसपास होंगे, ऑल ऑफ दीज. ओके, नाउ out of these all you've got to see is the, what do you call this thing, the anion. If it is stable then cool. वो नेगेटिव चार्ज को अगर कम नेगेटिव किया जाए, पोलैरिटी कम की जाए, राइट? OH बॉन्ड की पोलैरिटी इफ इट्स रिड्यूस्ड, दैट मेक्स अ एनायन स्टेबल. दैट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, राइट, then that will reduce this negative charge. So fluorine should be the strongest, this should be the least. That's what I understand. We don't have to look at NCERT, but it should be C first and D last. So C first, D last. Okay, this is the answer. A should be the answer. And directly NCERT में भी ये दिया है, but it is logical. It is not something you have to mug. ये काफ़ी logical चीज़ है, ठीक है? Electron withdrawing group जो है इसको stabilize करता है, yeah, stabilizes the negative charge. So strengthens the acid. This weakens the acid because उसको और देता है, like say CH3 group, any R or anything of that sort. So you know, any of these things. ठीक है, cool. Yeah, so the answer is very evident and it is option A. Yeah. Yeah, Rishabh, exactly what I mean. You got to pay attention. Yeah. To life around you. Yes, Deepak, बिल्कुल सही, स्निग्धा, absolutely. Yeah. आइए. ऋषभ, comment दे रहे हो? For SN2 reaction, comment भी खत्म हो गया शायद ना, 18 तारीख को ही था उसका. I'm trying to get the papers. As soon as I get the papers for comment, I'll do a session there as well. And I have received papers for bio, physics and all these other things. I've shared it with my awesome friends and they'll also figure this out for sure. All right. Oh yeah, आपने बताया था. SN2, एक और organic question. SN2 reaction, the increasing order of reactivity of the following alkyl halides is what? Alkyl halide. SN2 मतलब क्या? Making a carbocation. Is it carbocation? नहीं, hold on. SN2 मतलब kinetically limited. पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस हैं, चलो ठीक है, ऑप्शंस का कुछ बड़ी बात नहीं है. बट व्हाट डू वी हैव टू डू हियर? इट इज गोइंग टू बी किनेटिकली लिमिटेड, ओके, विच मीन्स दैट लीविंग ग्रुप का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट देर ऑल द सेम लीविंग ग्रुप, सो इट डजंट मैटर. किनेटिकली लिमिटेड मतलब कि जो सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेड होगा, दैट सबसे आसानी से चीज़ें निकल जाएगी. इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट, ओके. इंक्रीजिंग मतलब दिस इज गोइंग टू बी एट द एंड, एंड सबसे बैड, द वर्स्ट वन इज गोइंग टू बी दिस, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस इधर है. Steric hindrance. Okay, so that's it. I need to have C at the end, A at the starting. C at the end, A at starting. Only option has this. Let's move on. Yes, C, B, D, A. Absolutely right. D, yes, bilkul. Okay, Rishabh, thanks for this. Thanks for the ideas. I've got the team to change the default mode to low latency on both NEET and JEE channels. Thanks for the inputs. Oh, ये वाले अच्छे थे. These questions, I like them. I like them quite a lot. They are simple questions in the sense कि आप इसको कर सकते हो, करने में कोई बड़ी बात नहीं है. But if you mess up the first question, then you will mess up all the 3 questions that come after it, mostly because they're all linked. ठीक है? That's why it's a good question. But it tests the basic idea, और कुछ fancy चीज़ नहीं, कुछ आपको बहुत ज़्यादा effort नहीं लगाना है. So I really like this question. तो ये थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा है, and it's saying कि देखो, this is the reaction, ये सबसे नीचे वाली चीज़, this is important. They have balanced the reaction for you. और क्या करना है आपको लाइफ में? They did not even ask you to balance this. Okay. Then they are saying that 67 liters of H2 at STP reacts in 15 minutes. पहला सवाल out of this passage. Do you want some more time on this passage? Is this okay? Give me a thumbs up if you know जो हम लोग passage में लिखा है, बोल रहे हैं, वो सब ठीक है. कोई चीज़ नहीं है ना. This is chill. It's okay. First question, अगर कुछ है तो बताओ. I can read out the passage again, but that's the main thing at the end. Okay, right at the bottom. The number of moles of hydrogen oxidized is what? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज. अच्छा ठीक है, बट सवाल में दिया क्या था, यही चीज़ हाईलाइट कर देते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज. आई थिंक विल विल डू दिस प्रीटी इजीली, राइट? 67.2 liters STP reacts in 15 minutes. Now you don't need any of that. It just asks you for number of moles of hydrogen oxidized. So 67.2 liters. Take 1 atmosphere as the pressure, and 1 atmosphere में N is proportional to V, where for 1 mole is going to be equal to 22.4 liters. That's it. So into 3, in fact, will give you 67.2. So the answer for this one is going to be just 3. Also, I can use this in the questions that come, but इस question में ज़रूरत नहीं है because 15 minutes दिया है, तो I'm guessing one of the questions that come later on I will need this.
बट मे बी नॉट राइट नाउ. द आंसर इज वेरी डायरेक्ट, इट इज सी. या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ओ ये कर लिए थे, अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ देखो, दैट्स ऑल्सो स्मार्ट थिंग टू डू. आई एग्री ऋषभ. इफ यू फील लाइक इतना बड़ा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, देन स्किप द क्वेश्चन. यू कैन स्किप द क्वेश्चन. बट मेरे हिसाब से ये स्किप करने की जरूरत नहीं है. अभी तक बस एक सवाल ऐसा इन 12 क्वेश्चंस, एक सवाल ऐसा दिखा है जो भाई स्किपेबल है. बाकी आई फील आर वेरी डुएबल. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. ठीक है, पैराग्राफ सेम है तो वी वॉन्ट नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द पैराग्राफ. एग्जैक्टली वही चीज़ दी है, नथिंग न्यू इन द पैराग्राफ. लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. Number of moles of electrons produced in the oxidation of this. Now initially this question may seem a little scary, like अरे भाई electrons मतलब m equal to zit से कुछ करना पड़ेगा. But in the previous question we have just identified कि 3 mole of hydrogen is getting out. Okay, we have already done that. So all you have to do now is what is the n factor of hydrogen, right? That's all you need to do. Once you have that, then you are sorted. So that's why this becomes a very straightforward question now. 3 मोल दिया है एंड n फैक्टर भी क्या है ये भी आपको दिया हुआ है. देखो लिखा है कि 1 मोल हाइड्रोजन इंटरेक्ट्स विद 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो n फैक्टर यहाँ पे दे दिया डायरेक्टली 2. सो यू डू 3 into 2 यानी कि 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खत्म. यू आर डन. 6 एग्जैक्टली स्निग्धा. दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट. बट यू स्टिल वेरी गुड एट इट. यू फिगरिंग एवरीथिंग आउट. अश्विनी जो आपने नहीं दिया, ओके दीपक, थैंक्स फॉर स्टिल चेकिंग द वीडियो आउट. Are you giving more exams after this, Snigdha and Deepak, or you just ऐसे ही time pass के लिए chilling out? That's okay. It's good to have this interaction with you guys anyway, because few people who are watching this live, few people watch it after 2-3 days, few people watch it after 1 year or 2 years. सबके लिए beneficial होगा, right? That's the wonderful thing about videos. And IIT, okay, IIT के लिए this is not going to help. IIT exam थोड़ा बहुत भारी होने वाला है. Yeah, I think it's more AI level का. And I'm not even saying JEE main because आजकल JEE main is weird. JEE main from 2019 or before, or AI triple E. That's the level that IIT is going to be at. Yeah. Oh, hi, Rakshit, 29th को है. BitSat, I don't know if it's help for BitSat. I feel it's a bit too direct for BitSat, Chirag, बुलबुले जी. BitSat भी थोड़ा complicated है. And also BitSat में सबसे बड़ा चीज़, I think, and correct me if you know if this is different from what I know, +3 -1 is the marking scheme for all questions in BitSat. So that becomes very interesting. और आई थिंक CUET में मार्किंग स्कीम बाय द +5 -1 थी. सो यू आर नॉट penalized वेरी मच फॉर नेगेटिव मार्क्स, बट यू आर गिवन अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर पॉजिटिव मार्क्स. ठीक है, तो जो आप सही करोगे उसके, दिस इज CUET में +5 -1 था, राइट? बिकॉज 200 मार्क पेपर आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 50 आपको मार्क करने ना. ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था, बट आई विल मेंशन इट वंस अगेन इन द एंड. ऑल राइट, कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेम आइडिया इसमें पूछा जा रहा है. देखो, the quantity of electricity produced in the oxidation of this. Now see there how they are all related. अगर आपने पहला सवाल ठीक किया about 3 moles, then you will get that 6 moles correct of electrons, and now you will get this correct. क्यों? Because this is just 6 farad. Quantity of electricity कितनी होगी? And all you need are the basics of electrochemistry. कोई भारी formula नहीं, कुछ नहीं. Just the basics you need to have understood properly. That's why I really like this paper. एंड पीपल विल से CUET इजी, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस पेपर को करने में. JEE मेन में करने में इतना मज़ा नहीं आया मुझे, क्योंकि यार JEE मेन में चीज़ें यार डायरेक्टली NCERT लाइन बाय लाइन दे रहे थे यार. आई वॉज नॉट एन्जॉयबल फॉर मी. इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, बट आई लाइक दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस. यू नो, थोड़ा बहुत है तो फिजिकल केमिस्ट्री. JEE मेन में भाई फिजिकल केमिस्ट्री दे ही नहीं रहे थे. आई डोंट लाइक इट मच, बट दैट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. डजंट रियली मैटर सो मच. 6F, राइट? सो 6 फैराडे होगा. यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ था पहले हमने जो किया था. Okay, all this was done. We found out that this into 2 will make 6 mole of electrons. So that means 6 Faraday charge. 6 Faraday matlab 6 into 9, 6500. That's it. Which is this answer right here. B. Yes? Yeah. Okay. हाँ, English भी होता है. BitSat में तो होता है. अच्छा. All the best for everybody. Rakshit, 29 में कौन सा पेपर है Rakshit? I'm not aware of this. I thought it was getting over 16 to 18 में नहीं खत्म हो रहा था. Or is it a different paper Rakshit? Yeah, right. See, Rishabh has also given the paper. He feels too that it was more interesting to write. Yeah, as it should be fulfilling, right? When you're giving the paper, मजा आना चाहिए पेपर में. ओ अच्छा, हाँ रक्षित, दिल्ली में पोस्टपोन हो गया था इलेक्शंस की वजह से. इलेक्शन या किसी और कारण. हाँ रक्षित, तो आपके लिए देखो, एवरीबडी फ्रॉम दिल्ली, प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली. हाय श्लोक, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था. हाँ, दिल्ली के दोस्तों प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली. इसी टाइप का पेपर होने वाला है. बेचारे CUET वालों को फिर से पेपर बनाना पड़ा और दे मस्ट हैव यूज्ड समथिंग, बट बहुत बड़ा काम है यार टू मेक सो मेनी क्वेश्चंस दैट आर नाइस एंड गुड, राइट? ओके, कूल. अब देखो, दिस इज सी, स्टिल वी आर स्टिल डाउन दैट लाइन.
I like this. If the entire current produced is used for electrode deposition of silver, amount of silver deposited is what? 6F था, that was the amount of charge. So यहाँ पे amount of current, entire current, see this is what, this line is misleading. Entire current का क्या मतलब है? It is the charge that matters. Current का कोई मतलब ही नहीं है. Current at what charge? Current into, anyway, so current into time, you need to do into time, right? तभी तो it makes sense. So ये wording थोड़ी सी अजीब है, may throw some students off, but essentially we're talking about charge here. Okay, और पिछले वाले में लिखा था चार्ज कितना है, इस वाले सवाल में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा. m equal to ZIT you'll have to use. So the mass Z is what? Electrochemical equivalent. मतलब the molar mass divided by n factor. Luckily या unluckily 108 mass है, easy number. N factor is 1. So that is what I've written over here. Divided by the charge of 1 mole of electrons. This is Z. Into 1 by charge on 1 mole. This is all very basic stuff. Very basic. Okay. And look at this. This I've split that back into 6 into 9. 9, 6, 7, 5. देखो दोनों प्यार से cancel हो गए. So 6 into 108, 648 grams. That's the answer. Fun. Easy. एक सवाल interesting name number. Yeah. लोकसभा elections. Yes. रक्षित भाई तू मैसेज रिट्रैक्ट काहे कर रहा है? Why are you like Mission Impossible kind of thing? This mesh will self destruct in 7 seconds, 15 seconds, जो भी था. खैर यार ये पैसेज तो खत्म ही नहीं हो रहा है. बट ये वाले सिंपल सवाल है. देखो सोर्स, then we are back to NCERT. When after doing all that we're like, wait, what? The source of electrical energy on the Apollo moon, like what? So I think this one's skippable because you're like, bro, how am I supposed to know this suddenly now? I feel this is the second question that is skippable according to me. Okay. But yeah, if you know it, that's the answer. NCERT, this is one of the direct NCERT things. I mean, they asked it, right? So yeah, this is the answer. This is the answer to this. A funny question. I don't hold it personally against them because they've made some good questions, so they can get away with things like this. अच्छा, and then ये देखो, then बहुत बड़ा डरावना सा पैसेज, पूरा 3D of पूरा D series है, okay, 3D, 4D, 5D, and then they've gone on to give 4F and 5F series also. They're like such a intimidating paragraph. खैर, anyway, ये सब ठीक है, हम लोग skip कर देंगे, paragraph पढ़ने की जरूरत नहीं है. We can do this directly without all of that. This question is interesting. Hey तेजस जी, मैंने शुरुआत में दिखाया था, maybe you can go to the starting of my lecture right now and see the kind of universities. और आप CUET के साइट पे भी जा सकते हो. तेजस, I'll give you the link. बोनस, राइट? हाँ, मुझे भी लगता है ये वाला बोनस होगा. रुको, CUET कोई साइट डाल सकता है क्या? I have this new system where all tabbing and all is a little weird. So if you guys are okay, आप लोग CUET का वेबसाइट डाल दो और just look it up. Look up CUET का वेबसाइट information brochure. उससे आपको सारी information मिल जाएगी. तेजस, I have done it in the starting of the session, but if you can't go ahead and rewind that, just look it up. CUET information brochure. सारे आपको बेसिकली स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट्स की हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो वाले प्राइमरली. ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब यार सारे करेक्ट दिख रहे हैं मुझे तो. श्लोक एंड आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन 2-3 बार ओवर टेलीग्राम. लाइक यार ये तो सब सही लग रहे हैं, मुझे लग रहा है सब सही लग रहे हैं. देखते हैं, ये तो है ऑब्वियसली सही है, दिस इज सही है. दिस इज अ लिटिल ट्रिकी बट ऑल्सो ट्रू. दिस इज ट्रू. दे आर कॉल्ड मेटालिक. ओके, दे आर कॉल्ड मेटालिक कंपाउंड्स. And ये भी सही है. So if I were to pick all of them, this seems to be the shadiest one, but I feel they're all correct यार. This is obviously correct. Yeah, Ag plus का दूसरा वाला जाओगे तो it's going to be a lot more than palladium. Okay, so you can look up the values. Go to ptable.com. I'm not going to do that in this class because I have 50 questions to cover. I'm on question number 17. So go to this. From this you will get this, and this I think you will get from Wiki itself. Wikipedia से आपको ये दोनों मिल जाएंगे. So if I were to be very shameless, I'll say कि इसको करो, mark this, but I don't think this should be. So this is the third question that I would say must skip, because and they forced their hand on this, and this is not a good question. They should not have given you this question. I've been singing praise of the CUET exam, but ऐसे सवाल नहीं देने चाहिए उनको. I do not like this question. And if there's some justification around this, I'd like to hear it, but मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है. Which of the following is the correct order of second ionization enthalpy? Good question. It's a nice question. Interestingly, inorganic के सवाल कम आए थे. If you want me to just go back there, hold on. देखो, this is the split. Okay, direct NCERT जितने inorganic के total सवाल ही 11 आए थे out of 50. And out of that direct NCERT से कम आए थे. The percentage is the lowest of inorganic. और
इसका सबसे ज़्यादा है ऑर्गेनिक का, भाई सीधे एनसीईआरटी से दे रहे हैं. फिजिकल वॉज ऑल्सो थोड़े कम ही थे डायरेक्ट एनसीईआरटी से. एनीवे, सो इसमें थोड़ा सा एफर्ट हमको लगाना पड़ेगा. व्हाट डायरेक्शन? लेट्स राइट डाउन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, पहले Z निकालो एंड दिस आई रिमेंबर इट, STUV, इसलिए जो है पहले आया स्कैंडियम, देन टाइटेनियम एंड देन वेनेडियम. आई वुड ऑलवेज मेस अप द पोजिशन ऑफ टाइटेनियम एंड वेनेडियम, एंड दिस इज व्हाट आई फाइनली वाइल टीचिंग आई रियलाइज, भाई आई नीड टू नो इट, मुझे तो जानना चाहिए क्या होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज थिंग इज. उसके बाद तो इट्स फाइन, क्रोमियम, Fe, मैंगनीज एटसेट्रा एटसेट्रा, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर एंड जिंक. ठीक है, एनीवे, सो दिस इज माय पर्सनल प्रॉब्लम, लाइक मुझे याद करना बहुत मुश्किल होता है लाइफ में. या यू मार्क D, अरे इन द प्रीवियस क्वेश्चन. ऑल राइट, गुड गुड गुड. I don't know what you're talking about. You mark D? Yeah, okay. But you could also... Nahi, no, Rishabh. No. Oh my God, read what Rishabh is saying. I'm never going to say that out loud. Not because it is talking about a famous personality, but just the idea of these abbreviations is just... वैसे नहीं होता है. Like, I just can't do it. ठीक है. Anyway. This is the electronic configuration of these elements. Okay. इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालो चिल ही है, दोनों में चिल है, बट इसमें नॉट चिल, नॉट सो चिल, राइट. यू गोइंग टू बी मेसिंग अप अ D5 कॉन्फ़िगरेशन. सो क्रोमियम मस्ट बी द हाईएस्ट, सिंस इट शुड बी C. ओके, आई वुड से बाय द वे इन द प्रीवियस वन श्लोक सेफ थिंग वुड बी टू स्किप इट, बट ठीक है, मार्क कर दिया तो कर दिया, अब क्या करेंगे, छोड़ो. अब ये वाला है भाई, डेफिनेटली स्किप, लाइक मैसिवली स्किपेबल अनलेस यू नो दिस. ओके, सो आर स्किपेबल काउंट is gone up to 4 already out of 19 questions. It's okay. 50 में से 10 skip करने से 19 में से 4 किए हैं. It's a good decision. Because bro, how are you supposed to know कि color क्या है इसका unless you have marked this table. Okay, this is V4 plus, this is copper 2 plus, this is V4 plus again, this is 2 plus, again 4 plus. It looks like जबरदस्ती vanadium की बात हो रही है. 2 plus, ठीक है. There's no way you're going to know the color unless you've seen this table and marked it for some reason. Okay, so the answer is this, vanadium 4 plus and copper 2 plus. ये दोनों है blue. What are you going to do, right? Yeah. It's okay. Yeah. अच्छा, I get your logic, but मैं generally लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई देखो अभी it's not a big deal. 4 skip किए ना अभी तक. We can afford this. By afford I mean getting a 200 score. I'm not talking about a 150 or 180 score. Afford मैं बोल रहा हूँ फिर भी तुमको 200 का score we will get. Okay, I am confident. Let's see. Which metal has the highest oxidation state in the first row transition series? Let's mark manganese and go on. है ना, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसमें तो we don't spend time on this one. Good. एक आसान सवाल. Which of the actinoids exhibits highest number of oxidation states? Oh no. Why do the actinoids? अच्छा, हाँ ये एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था कि बिकॉज वो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है. 5D नहीं सॉरी 6D 5F या और 7S, इन तीनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है. दैट्स व्हाट आई रिमेंबर, राइट. सो लुक्स लाइक दिस सीम्स टू बी द मोस्ट रेलेवेंट आंसर, ऑल्दो इट डजंट हैव 7S इन इट. आई फील बी शुड बी द आंसर. यही मुझे याद है और ये भी एनसीईआरटी में था डायरेक्टली, या है ना. दीपक सिंह डी. अच्छा नहीं, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा दीपक जी, इट विल बी लो, इट विल बी लेस. रक्षित जी कहाँ जाए आप, आपका तो एग्जाम है, यू शुड बी डूइंग दिस. Yeah. Khair, this is the answer to this one. Let's move on. Yeah, B should be the answer to this. आगे बढ़ा जाए. Remind me before I end the session. Be careful. Keep the annotations. मैं बार if I click escape twice the annotations go. This doesn't give me a pop-up. My old system used to give me a pop-up. ये pop-up नहीं देता है. So I need to not press escape twice. Okay, just once. So that the annotations stay. You have to remind me before I end the session. I want your help in building this habit. अच्छा, camphor in nitrogen gas. Camphor तो solid है, nitrogen gas is gas. What? Okay. Huh? This should be. Hey Harshita, good evening. Right? This is B, right? I mean, what? Is this a real question? Okay. Yeah, this is a real question. Okay, let's move on. Oh, this one's interesting. Looks like this one's interesting. Identify the correct order of organic compounds in the following chemical reaction. थोड़ा effort लगाने वाला question है, but again, looking at the options, it is quite clear
कि पहला वाला चीज you're forming RMGX, right? That's what we are doing. बट कहाँ बन रहा है RMGX? लुक्स लाइक पहले स्टेप में ही बन रहा है RMGX, और पानी डालने से क्या हो रहा है सोचना पड़ेगा. सो RMGX बनाने के लिए मतलब दिस शुड बी RX, फर्स्ट स्टेप मस्ट बी RX. अब RX दो जगह दिया है आपको, ठीक है, इट्स C एंड D, बट लुक एट दिस केयरफुली. Cl2 एंड में ऐड हो रहा है, तो इट इज वेरी लाइकली कि C शुड बी एट द एंड, एंड इफ C इज एट द एंड देन A1 इज द आंसर, देन 1 शुड बी द आंसर, राइट? है ना? जस्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज और कहीं ब्रोमीन का आने का चांस ही नहीं है. ब्रोमीन हैज टू कम इन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप. इट्स अ नाइस क्वेश्चन, नॉट वेरी हार्ड, बट थोड़ा सा एफर्ट लगाने वाला सवाल है. यू हैव टू रीड थिंग्स प्रॉपर्ली, ठीक है? सो RX must be BR over here, ठीक है? That is important, that is important. Okay, CH3BR पहला हो गया, फिर CH3M, this is RMGX, right? Okay, that's it, and then we can plot in the others easily after this. ठीक है, काफ़ी doable था, बढ़िया सवाल. We cancel some of these out and looking at this, one should be the answer, जो हमने figure out कर लिया था just with this guy right here. Awesome. Next question. आज हम लोग टाइम की फिक्र नहीं कर रहे. विल डू ऑल, डोंट वरी. आई विल नॉट से कि बस टाइम हो गया तो भाई हम लोग बंद कर रहे हैं. विल डू ऑल द 50 क्वेश्चंस टुडे. ऑल करेक्ट, लवली लवली लवली, दैट्स गुड दीपक, बढ़िया. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ये वाला सवाल थोड़ा सा अजीब है. ओनली ऑप्शन सी इज अ लिटिल ट्रिकी. ओके, ओनली ऑप्शन सी इज अ लिटिल बिट ट्रिकी. अब ये पहला टाइप का ही सवाल है. देखो ऑप्शंस में आपको बोल रहा है कि इट्स 3 ऑप्शंस दैट आर करेक्ट. 3 ऑप्शन करेक्ट, मतलब इफ यू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन यू आर सॉर्टेड. बट इज सी इनकरेक्ट बिकॉज इट्स लॉन्ग टू रीड. और ये वाला तो सही है, पाई ICRT, ये वाला भी सही है. हे, व्हाट डू वी डू? ABC. दैट्स इंटरेस्टिंग. देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. मुझे तो सब सही लग रहे हैं. एट फर्स्ट ग्लांस सब सही लग रहे हैं. देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर ऑप्शन सी प्रॉपर्ली. राइट, ऑप्शन सी में क्या है? देखो, आई हैव गॉट फ्रेश वाटर, आई हैव गॉट सलाइन वाटर, ठीक है? पानी का फ्लो, दिस हाउ आई रिमेंबर इट. वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. दिस may seem a little weird, but if you happen to do chemical engineering or mechanical engineering or biotechnology, you will learn something called mass transfer, and there is an idea of chemical potential. अब all of these fancy things to say कि things are always going to move where there is a concentration gradient. Concentration gradient इस तरफ भी है. Let me use a different color here. इस direction में भी concentration gradient है, but I am stopping the flow because of semi-permeable membrane. इस तरफ नहीं जा पा रहा है, इसीलिए द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर, या दैट कॉजेज इज टू फ्लो. अब ये सब मैं कहानी क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज पानी इस तरफ फ्लो हो रहा है. इफ इट्स गोइंग दिस वे, इस तरफ जा रहा है, और मुझे पुश करना है इस तरफ से. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई प्रेशर ऑन द सॉल्ट वाटर साइड दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द पाई विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर ये है कि पानी भरता जाएगा until it reaches some pressure, that is osmotic pressure. तो उल्टा प्रेशर उससे ज़्यादा करूँगा ताकि पानी बहना बंद हो, ठीक है? And if I do this, I'm basically going to purify this, right? इसका concentration यहाँ बढ़ता जाए, concentration of solute now, not of solvent, will increase on doing this, right? इसी से तो रेगिस्तान में पानी मिलता है, right? That's how we get drinking water. हाँ, बट यार ये भी तो सही है. अब क्या करें? या स्निग्धा, एग्जैक्टली, या आई एग्री. एडिमा सॉल्टी लोगों को होता है. थैंक्स स्निग्धा, आई सॉ दैट. वी आर नॉट गोना रिट्रैक्ट दिस, बट व्हाट इज दिस? हाँ, एंड नाउ आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स. मुझे तो सब सही. अच्छा, थैंकफुली. ओह, सी इज एन ऑप्शन. सी इज एन ऑप्शन. सी इज एन ऑप्शन. ओके, थैंक गॉड. I was like, this one more of those things we'll have to skip. No, we are good. C में ABCD है. Yeah. ये देखो, this is a numerical जहाँ बोलता है भाई प्रोटीन का मोला मास निकालो, तो this is true. Thankfully, I was like, भाई ये भी गड़बड़ हो गया. No, this is good. ठीक है, easy. But this is a time sink question. Okay, so I'm going to say skippable, but with a star.
स्टार क्यों? क्योंकि अगर आपके पास टाइम हो तो यू कैन सॉल्व इट. इट डजंट, यू हैव टू थिंक अ लिटिल बिट. ओके, यू हैव टू थिंक अ लिटिल बिट इन दिस क्वेश्चन. Skippable with a star. So we are at 4 or 5, between 4 and 5 skippable questions, and we are on the 25th question, which is we are doing well. We are doing well because 25 out of 50 is a good, exactly the number. This you please don't skip. Vapor pressure दिया है. It is like the most basic thing. ठीक है, 500 mm, 800 mm और total pressure 700 दिया है. It takes you literally 30 seconds to solve this question. Total pressure 700, which is PA plus PD, because D लिखा था क्या? B लिखा है. This is a typo. Anyway, this is from Raoult's law. Yeah, you write P naught A into XA plus P naught D into XD, and then put mole fractions. I have taken the mole fraction of D to be X. So this is going to be 1 minus X of A. That's all. वही मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ की. Otherwise, there is nothing to do here. So 800 minus 500 is 300. So 300 by this thing. Sorry, 300 by 200. 200 by 300, which is 2 by 3, so it should be 0.67. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखो 33 भी ऑप्शन है. बी केयरफुल, डोंट मार्क दिस, आप जल्दी में कर सकते हो. गुप्ता जी, ओके, हेलो एंड देन बाय, आई गेस. ओके, या एग्जैक्टली ऋषभ. हाय सुनील, लेट्स डू दिस. या इजी क्वेश्चन. फिजिकल शुरू हो गया. ये वाला सवाल भाई इंटरेस्टिंग है. It's interesting because it could scare you, but it's very doable. It could be scary because look at the coefficient of this. Kinetics का सवाल है. 2a2 plus 1 by 4x gives me something. Volume is increased to double its value by decreasing, it's a great question, by decreasing the pressure on it. If the reaction is first order with respect to x and second order with respect to a, the rate of the reaction को क्या होगा? क्या करें इस क्वेश्चन में? What do we do? थोड़ा आप एफर्ट लगाइए इसमें. If you have happened to study equilibrium with me, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वॉल्यूम या प्रेशर बदलने से क्या होता है. ओनली इफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट जीरो डज दिस मैटर. एंड हियर अब कुछ और ही हो रहा है, राइट? इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम पहली बात तो. बट अस्यूम वी स्टार्ट ओनली विथ A2 एंड X. एंड सबसे बड़ी चीज़ बाय द वे, द मोस्ट थिंग, द वियर्डेस्ट थिंग दैट स्टेयरिंग इट यू इन द फेस इज कि देखिए दिस K इंटू एक्स इन एक्स कौन देता है यार? KX A square is the order, is the rate, which is weird because 1 by 4 here, 2 here, it doesn't seem to add up. मतलब this is a complex reaction. It's more than a, it's not a single step reaction. It's got some weird slow step जिसका जो है आपको ये दे रहा है. All that is what could be scary. But once you get to this, you can solve it without बेझिझक. Okay. The idea here is that volume बढ़ाने से pressure कम होगा obviously, and P dash is P by 2 because volume double हुआ तो pressure आधा हो गया. अगर pressure आधा हो गया तो हर चीज का pressure आधा हो जाएगा. That is where we need to draw the line and figure it out. So KX A square, and that's the initial rate. Rate dash is going to be X by 2, A by 2 whole square. So then it becomes 1 by 8, and that's easy to understand. But again, I'm going to put this as skippable with a star on it. So we are almost at 4 or 6. Either 4 skipped or 6 skipped. Okay. Because दो जगह मैंने star लगाया है. Yeah, this was interesting. Okay. Total number of sigma bonds. This is almost certainly skippable. So now we are at 5 or 7. We're using up our 10 lives very soon, huh? P4O10, this is not an NCRT. This is not an NCRT. It's all right, Gupta ji. You're not disturbing the class. What thumb? And was it a thumbs up or thumbs down this time? What is the thumb scene about? I have no idea. This YouTube is being बहुत बदमाश with the random distractions. And luckily I'm not looking at it. Yeah? Doesn't matter. Okay. That's cool and weird also at the same time. I don't want YouTube doing these random TikTok like things where they... Oh man. You can't control everything. Yes, Sunil ji, thank you for that answer. But ये NCRT में तो मुझे नहीं दिखा. Did you find this in NCRT anywhere? I could not find it. This is a structure. Sometimes हम लोग JEE में पढ़ा देते हैं इसको. JDL में तो है, but it's a little weird, right? So 16 is the answer, and I told you it's skippable because unless you know this, there's no way of doing this.
So the answer is 16. There's not much for me to teach you about this. मैं आपको क्या पढ़ाऊँ इसमें? This is the structure, right? Yeah. But yeah, let's move on. In the electrolysis of alumina to obtain aluminum metal, the cryolite, we are at 6 or 8 of skipped questions now. Why would I skip this question? Because I feel that two things are right. Lower melting point to 950 degrees Celsius. I recently did a JEE advanced session, so I saw these numbers in JD Lee. एक लाइन में लिखा है कि it increases conductivity and it reduces the melting point to 950 from 2000s, right? 2000 degrees Celsius, 2300 कुछ तो था, some big number. Anyway, forget JD Lee. NCERT में भी यही चीज़ें लिखी है. Look at this. They shouldn't give such questions. I don't know why CUET would do that. JEE में इस टाइप के सवाल तो नहीं है जो blatantly गलत थे. Actually आए थे गलत सवाल JEE में भी आए थे. They need to use AI at least in these places to check things. खैर, look at that. Same line में लिखा है lowers the melting point of the mixture and brings conductivity. Literally same line में लिखा है. मैं क्या बोलूँ? Hence I say skip this question. Yeah. Identify the order of reaction if it's rate constant. Okay, this is finally an easy question. Another easy question. First order because per second, right? This is a no-brainer, right? So K, so what you have is dA by dt is K times A, right? And hey, hold on, does that make sense? Wait a minute. Rate constant is this? Yeah, absolutely. It does, right? So you get ln A is equal to KT. So this is dimensionless, unitless, and this right here is just going to be time. So yeah, this makes sense. First order, easy one. Yay! Aasan sawal. Let's move on. For a complex reaction, the order is equal to, ये वाला बताइए. Yes, असजद जी, बिल्कुल सही. Bonus try, वो भी try कर लिया. अरे यार, I missed the O at top P. अच्छा श्लोक, sorry. हाँ, इसकी वैलेंसी नहीं पूरी हुई. Thank you for that. Hence it becomes 16. Thank you. Yes, Snigdha and Shlok. Excellent. You guys have a great eye. पता नहीं वो कैसे O खा गया, but good. Thank you for that answer. Back to this question. नहीं, ये वाला नहीं. हाँ, यही वाला था ना. हाँ, इसका आंसर बताइए. 30th वाला D. सुनील, Snigdha, Shlok are all thinking D. Yeah. देखो, molecularity is equal to order, right? For a complex reaction, order is given by the slowest step, और उसकी molecularity will give you the order. That's it of the overall reaction. That is the answer. Absolutely right. NCERT से direct आया है ये वाला. और this is not that complicated. This is a good question, and I would say this is a time sink also. If you haven't mugged the formula, and I don't expect you to mug the formula, right? But we'll do it. I don't think we should skip this. But if we want maybe 6 or 8 tha, let's make it 6 or 9. So skippable with a star. But since we are using our 10 lives very soon, the stars are increasing. So I'm still at 6 in my head. 9 if you are feeling generous and you want to skip things. ठीक है, Van't Hoff factor, alpha सब दिया हुआ है, कैसे करेंगे? Let's do it from first principles. This is my first principle idea. C into n minus alpha, C alpha by n. Why by n? Take the example. If alpha is equal to 1, then this will be equal to 0. And this will be equal to C by n, which is exactly what happens here. When alpha is equal to 0, then, well, this is going to be 0 and this is going to be C. So, ठीक है. These are my boundary conditions that I check for. Yeah, maths में बोलते हैं ना boundary condition. Limits or जो भी you want to call it, extreme cases. So this works, okay. After you do this, life is very simple. I is what? This is mole at equilibrium divided by C, initial moles. Okay, equilibrium में कितने moles होंगे? 1 minus alpha plus alpha by n. Simplify this a little bit and you get 1 minus alpha times 1 minus 1 by n. Now, alpha मुझे यहाँ पे I की value दी है 0.8, alpha is given as 0.3. Substitute and you will get n equal to 3. है ना? किया क्या? Skippable with a star. श्रीनाथ, वो तो होंगे बट आप तो नहीं रहेंगे यहाँ पे, बिकॉज इस टाइप की हरकतें यहाँ तो हम नहीं टॉलरेट करते. ठीक है, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, राइट? एग्जैक्टली श्लोक, आई अग्री. डू इट इन द ट्रेडिशनल वे. ऐसे ही सवाल आने चाहिए जेई में, ऐसे सवाल आने चाहिए. ऋषभ, लाइफ में एक ही लाइफ मिलती है. या चलो, लेट्स मूव ऑन. लेट्स नॉट स्पेंड टाइम ऑन अनवांटेड एलिमेंट्स. लेट्स फोकस ऑन the wanted elements like carbon and hydrogen and oxygen that make up life, organic chemistry. Yeah, I should make a quote of chemistry random jokes. The oxidation number of, oh, this is straight. Cobalt in a complex, this is what? We can figure this out very easily. वो वाला तो 3 था, right? Did you guys figure it out? पिछला वाला, I didn't hear too many answers from you. Did I go over too quickly in that question?
Any doubts in this question? I don't mind taking, this is fine, right? This is okay? This is doable? Yeah? +3, +5 नहीं होगा? अच्छा, +3 मतलब उसका हो. This is okay, right? Alright, cool. बढ़िया. इस वाले का भी 3 है, कैसे? Because this is like Al2SO4 whole thrice, right? Exactly like that. मतलब this has a 3+ charge and none of these are charged. Not charged. Ethylene diamine, right? This is basically En, which is a bidentate ligand. So this is a hexa complex, right? Coordination number of 6 and इसका charge होगा 3. Simple straightforward question. Great. Let's move on to the next one. अक्षित कहाँ गए? दिल्ली वाले? एग्जाम है ना अभी? पढ़ ले यार. 29 बहुत टाइम है. If you just do this paper, you'll be solid. The correct structure of dipeptide. 7 or 10. I'm not doing this question. Like if I was in the actual paper, I'm being honest with you, I would not have attempted this. I'm being straight with you, right? झूठ क्या बोलना आपसे. I would have definitely skipped this question. किसको याद है भाई dipeptide glycerine और alanine का क्या है? At least I know the names, हाँ, alanine, and I hope it's glycerine, but no, I don't think it's glycine, not glycerine. What am I saying? Glycine. Bio के दोस्त स्निग्धा बताइए. I know you would know this. You did this? हाँ देखो, I knew Sigda would know this because bio people, they know these chapters inside out. A or B? Okay, lovely. Absolutely right. The answer is A. A और B दोनों सेम है क्या? What? एक मिनट. A और B. दाल में कुछ काला नहीं लग रहा है. A और C ऑप्शन सेम लग रहे हैं ना? No, Rishabh, it's not a dual channel stream. I just told my friends over at the NEET channel कि भाई आ जाओ. This is going to be relevant to you as well because there are few NEET people who give the IIT exam. Okay, I'm a little confused, right? There are two things that have the same option. Paper कहाँ गया? एक सेकेंड. Telegram खोलते हैं जहाँ पे आपने मुझे पेपर भेजा था श्लोक. Just give me 1 second. I'm going to check the option एक बार फिर से. I don't know if it's a typo from our end or या फिर actually सवाल में ही आया था. Anyway, I have marked it to be kind of skipped. We'll make it definitely skipped अगर दोनों same option थे, but I don't think it should be the case. Give me 1 moment. कहाँ गया? Yeah, show in folder. Let's open this up. Question 33. अरे NHCO CH2 NH2 यार ये तो same options हैं. Oh no, does it matter? I don't know. Yeah, that is ALA GLI. That was my stupidity. See, that's how amazing I am at this chapter. That is ALA GLY. Exactly. Singda, thank you. C is not correct. See, this is a hard question. Unless you know that alanine kaun sa or glycine kaun sa. Yeah, you're right. This is, the order matters, right? So it's like permutation and combinations. Like chair mein left mein right mein kaun sa baitha, you need to know. Yeah, now I remember from these amino acids. Right, thank you. GL glycine and alanine का जो है glycyl alanine is going to be this. Snigdha, awesome. Thank you for that assist right there. Yeah, A is the right answer on this one, but I would skip it for sure. The total number of ions produced from the complex, this is easy. We should not be skipping this under any circumstances. Do you guys want a break? We've been here for about an hour, right? Do you want like a 2-3 minute break or something? You want to chill? You can do that. I'm going to talk about time pass stuff for 2-3 minutes after this question, so you can go get water or something. I'm chill though, but we'll do some time pass so you can take a break. Total number of ions produced in this complex. This is chill, no? 3 + 1, 4 हो जाएगा. इसमें क्या करना है? 4 is the answer to this. 4 is the answer. Okay. So if you guys want to go get some water, let's take a 3-minute break. So 3 minutes we're going to do time pass. Timer, 3 minutes. 3 minutes counting down. Okay, 3 minutes counting down. अभी तो आए हम 5 मिनट पहले. हाँ यार, that's the good thing about online things. You can just take a break anytime and come and no one's ever going to know. But ठीक है. एक बार commitment दे दिया तो and all of that. Let's do time pass for 3 minutes. एग्जाम्स खत्म है और भी एग्जाम लिख रहे हैं आप लोग. आई टुक माई ग्लास ऑफ इट्स वियरली हॉट हियर. और कितने एग्जाम दे रहे हो? आई एम गुड मैन. या बैंगलोर का मौसम इज अ लिटिल वियर्ड. आई मीन इट्स गुड बट तबीयत खराब होने वाला मौसम है. सो आई वाज अ लिटिल सिक, सो दैट्स व्हाई आई मूव माई क्लास यस्टरडे. थर्सडे क्लास मैंने सैटरडे को मूव कर दी. बट CUET का पेपर मिलेगा तो लाइक जोश में आके तबीयत ठीक ही तो आज वी गॉट इट मेड इन वी आर हियर.
एडवांस्ड हाउ लाइफ, आप बताइए. मेरी लाइफ तो आप लोग हमेशा सुनते रहते हो. आई एम ऑलवेज टॉकिंग. यू टेल मी व्हाट्स अप विथ यू. बारिश तो नहीं हो रही है ना. कल मैच ब्रो. श्लोक, डिड आई नॉट सेंड दैट यू? 95% चांस ऑफ रेन. एंड माई फ्रेंड इज माई फ्रेंड, रियली क्लोज फ्रेंड, वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. उसका नाम हरीश है. ही फ्लू डाउन फ्रॉम द स्टेट्स. ओके, उसका बर्थडे था 12 तारीख को. ही फ्लू डाउन फ्रॉम द स्टेट्स. ही इज गॉट टिकट्स. ही इज अ बिग चेन्नई फैन. And all of us are RCB supporters, obviously, because we're in Bangalore. There are two of them, Harish and Sudarshan. They are CSK fans. So, rivalry and all. And he's flown down, he's got tickets, he probably wants to go to the match tomorrow. I don't know, man. I hope it doesn't rain. It'll be fun. Yeah. अरे दीपक जी, हाँ क्या करें. If you guys generally want to do time pass, come on to the Discord channel. हम लोग पढ़ाई की बातें करते हैं. We help each other out. You can also blow off some steam. So yeah, there are sometimes people singing. There's a guy, I don't know if you know him, but I think वो Sid, he'll come back after the advanced exam. वो आके गाएगा. He plays really good guitar and all that. Everybody is RCB supporter. सही है. Life is in transition state. आपके मार्क्स कितने आएंगे यार? That's unfair, no? Because I should get 200 in this paper. If I don't, that's quite shameless. Advance में I'm not. मैं organic advance में most likely छोड़ ही दूंगा. I will do physical inorganic पूरा in advanced. You know, I'm confident I can attempt पूरा and maybe get it right as well. Organic में एक दो साल हो जाए तो I'll be happy in advanced. But for NEET and JEE, I'm confident. After teaching you guys organic for 3 months, I'm confident. पेपर इतने आसान आ रहे हैं यार. That's what I'm trying to say. And I'm not belittling anybody. I'm saying कि यार आपको बस NCERT पढ़ना है. I know I'm talking mainly to students जो अभी 2024 वाले ईयर में कर रहे हैं. But if there are any 25 students watching this, any 26 students happening during this really random spot जहाँ where we're doing time pass, please यार NCERT पढ़ो. And ask Shlok, who's got a crazy score. Shlok, we're out of time to do time pass. But Shlok, if you feel like, share with them the rank that you've got in JEE main, if you don't mind it. Yeah? Give an approximate number. You don't have to give the exact number. And tell them that you studied NCERT, bro. Because teachers की बात तो लोग सुनते नहीं हैं, but students who do well, उनकी बात पूरी दुनिया सुनती है. तो if you feel like it, share that with them. And I really hope students will benefit from this. एक दूसरे की बात सुनो, help each other out. Competition का ज़माना एक level है thinking का, competition का. उससे much higher level thinking है encouragement का. And you will see this in life. The more you encourage each other, साथ में you all will grow. The more you think कि सामने वाला मेरा competitor है, you've lost the main focus of human life. मैं बहुत सीरियसली ये बात बोल रहा हूँ. वो टाइम पास नहीं था, so I'm allowed that extra 30 seconds. Right? Yeah, let's start. Exactly, ऋषभ. यार तू तो बनेगा यार. तू इलेक्शन में खड़ा होने वाला ऋषभ, मुझे लग रहा है. Yes. Thanks, Shlok. See? There you go. That's exactly what I wanted. Thank you, Shlok. Thanks for sharing that with everybody here. Arrange the following in decreasing order of number of molecules. बताइए. Yeah, let's start, Snigdha. We have started. Right on time. I respect time and हमने just अभी ये किया है. All right. So, what do we do now? इसका क्या करें भाई? बताइए. एक मिनट, मेरा वो चला गया. Where is my chat? Chat window. A bit too straightforward. कर लेंगे हम लोग ना. Anyway, you get the molar mass of all these compounds. Yeah. This is 32, not 16. This is 44. This is 28. This is 2, not 1. मतलब obviously this will have the most. This will have the least. Right? Mole concept का idea है. तो D should be the most and B should be the least. Decreasing order मतलब D should be forward. पहले आना चाहिए D. Right? The only option that has this is B. A very easy one. I know I did not give you options, but इसकी ज़रूरत भी नहीं थी. Hey, हमने start कर दिया, but मुझे आपकी chat नहीं दिख रही है. Is it because you guys are not saying anything, or is it because ये भाई साहब रुक गए हैं? कभी कभी this has not happened to me before on this channel, but पहले हो जाता था. So I'm just going to quickly check if there is an issue. How do we check? Aakash JEE. No, that will not work. Hold on. Are you guys? Can you just give me a thumbs up to make sure that? Okay, I'm going to do something. I'm just going to close chat and open it anyway, just for my. Okay, cool. Thanks. Thumbs up. You're actually typing thumbs up. That's great. Alt plus. Okay,
Cool. Yeah, easy one. The Cu metal crystallizes into FCC lattice with a unit cell edge length of 361 picometers. The radius of copper atom is what? Solid state, but doable. कोई बड़ी बात नहीं है. देखो FCC lattice मतलब कि क्या है? We'll make a small attempt at drawing something. मतलब these yellow thingies are what? They are corner atoms. Let's do the different color. Let's use a nice light blue to denote face centers. ठीक है? These are face centers. And together with their powers combined, you get an FCC lattice. ठीक है? Voids हैं बहुत ढेर सारे edge centers, voids हैं वो सब. We don't need any of that. इसमें बस ये देखना है कि nearest neighboring distance is going to be across the face diagonal, not the body diagonal, and A की value is 361. A मतलब the edge length, okay? Unit cell edge length A है 361. 4R equal to root 2A. Just write that down here. You're not going to have to spend too much effort on this. And luckily the numbers are kind of nice. 4 and 360 get cancelled. 4 9s are 336, right? So 19 to 1.4. So 1.5 से थोड़ा कम. 9 into 1.5 is approximately 135, right? 13.5. So similarly, answer is going to be 127 here. That's the closest one. Yeah, Shlok, absolutely. This is the one we need. Absolutely. Thanks, Snigdha and Rusha for the thumbs up. Rishabh. Yeah, I will remember that. Yeah. आगे बढ़ा जाए. Have you guys seen the movie Lapata Ladies? He keeps saying जागते रहो, which is hilarious. That was such a fine movie. Very nice movie. I've seen a nice movie for a very long time. Desi movie. If 75% of a first order reaction gets completed in 32 minutes, time taken for 50% completion of this reaction is what? These are easy questions, right? But you need to know the concept to be able to answer them. There are two different things. कुछ सवाल मुश्किल होते हैं, और then you have to get. So for that, getting 25 questions for an hour where the questions are hard is good. Where the questions are that easy, you don't need 1 hour to do it. These questions, you need 1 hour to do 40 questions. You have to jaldi karne, right? So you need to know the syllabus inside out. 12th ka pura properly you need to know. Okay. So 75% completion मतलब 2 half lives. 1 half life में बनता है 1 से आधा, फिर बनता है 1/4. मतलब कि 1/4 बचा, मतलब 75% completion. 25% left over. This is the idea. So 2 half life is 30 minutes, 1 half life is 16 minutes. बस खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं. From first principles. First. Yeah, exactly, Shlok. Only 12th का syllabus. Yeah. Right. Interesting. अरे can't see movies क्या भाई, 10 दिन है, सब मूवी देखोगे तुम लोग कॉलेज में, और क्या करोगे तुम लोग. ठीक है. Which of the following compounds, looks like मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया है, but what happened here? Anyway, yeah, which of the following compounds will be repelled when placed in an external magnetic field? This is a good question because students sometimes forget this. They forget this कि diamagnetic मतलब repelled in magnetic field. But physics अगर पढ़ा है तो उसमें तो मालूम होगा. You will not forget. Chemistry में you may forget, but physics से I think you will know that diamagnetic means repelled by magnetic field. Okay. Diamagnetic does not mean कि वो non-magnetic है. It means it's repelled by the magnetic field. Okay. So diamagnetic कौन सा होगा? Write down the electronic configuration of the ions. I've skipped a couple of steps. I've written directly Cu2+, Cd2+, Fe2+, and Fe3+K, this thing. The fact that these are strong field ligands and can cause pairing, that is what we should be focusing on. ठीक है. And let's check ये Fe2+ and Fe3+. मेरा gut feeling है कि Fe2+ will work out because it will have 6 electrons, but we can just check एक बार. ठीक है, Fe2+ कौन सा है? तो अगर मैं पहला वाला चेक करूँ, Fe+6 Cn- is a charge of -4, right? Because it's K4 over here. Then Fe is +2. So this works out. Fe2, this should be the answer then. Yeah, this one's diamagnetic. Hence C should be the answer. Yeah. Right. That's okay. Yeah, ये वाला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था. I agree. But not skippable. I don't think you have to skip it. Skip करने वाला सीन है. देखो 3-4 सवाल ऐसे थे ना, देख के आंसर बता दिया, तो you get time here. थोड़े टाइम से क्वेश्चन चल जाएंगे. I feel टर्म चल जाएंगे. Exactly, Shlok. Odd electron में it cannot be. Yeah, I don't think it is skippable. I mean, again,
आई एम एमिंग फॉर अ स्कोर ऑफ 200 माई फ्रेंड्स. स्किपेबल तो सब स्किपेबल है ना. इट्स ओके. एंड देखो, आई एम हियर टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि 200 स्कोर पॉसिबल है. अगर आपको 150 स्कोर मिल रहा है, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड स्कोर. डोंट गेट डिसहार्टेंड. ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि 200 स्कोर भी पॉसिबल है. ओके, थोड़ा एफर्ट लगा के. सो राइट नाउ वी आर एट ईदर 6, नो वी आर एट 7 और 10. वी वर एट आर लिमिट. नहीं, 10 वाला नहीं, वो हमने हटा दिया. इट वॉज ईदर 6 और 9 और 7 और 10. आई डोंट रिमेंबर दिस, याद नहीं आ रहा है मुझे, बट वन ऑफ दीज टू. द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हेक्सा, चलो ये तो कर लोगे. हेक्सा साइनिडो मतलब 6 साइनाइड, मैंगनेट 2 मतलब Mn2, and this is a negative ion, right? Negative क्यों आ गए? This is the formula you need to use, okay, to get the spin only magnetic moment. Negative क्योंकि ये 4 minus है, Cn6 मतलब this is 2, right? You need to make this here, okay. Once you get this and this, just substitute. There is a 3d5 species at the charge state. Mn in itself is simply going to be argon, 3d5, 4s2, इसको हटा दो, you get this. Hence, it is going to be 6, but you don't need that here. But excuse me, directly दिया, it's not numerical entry. I was in that J वाला mode, hence I wrote 6. 5.9. Oh, Shlok, 1.73 लग रहा है. Really? Huh. Did I mess something up over there? What is it that I did that was weird? Please help me out with this. Shlok, pairing कैसे होगी यार? But you have, see, pairing would make sense if you are, so you're saying कि pairing would be like this, 2, 3, sorry, 4 and 5, इस टाइप की pairing होगी? इस टाइप का pairing क्या? I have not seen this. If that's the case, then I don't know. That's very interesting. If this is the case, I'll have to look this one up. Let's see that on the spot. अगर ऐसा है तो, interesting. I'm not very familiar with a single unpaired electron. So D2sp3 is what you're saying, huh? That's very interesting. Mn, there you go. See, 200 nahi aa raha mera because I messed this question up. If that's the case, but I don't know. Yeah, I'll have to get back to you on this one. This is weirdly an exception or something, is it? ठीक है, देखना पड़ेगा इसको मुझे. I'll have to check this out. D2sp3. Okay, cool. I'll take your word for it for now. ठीक है. According to this, it's going to be 1.73. Cool. Thanks for helping me out with this. Okay. I'll have to check it out. Yeah. Uneven paired. So looks like this. Thank you. All right. Let's go on to the next question. The correct order of increasing boiling points of following compounds. This is a no-brainer. This should be number 1. This should be number 2. And then we'll see. But just looking at that, looks like D is the answer. We don't have to spend time in this at all. Alcohol, उसके बाद aldehyde, and then anything else. Interestingly, if you want, and there's also an ROR here, also an ether. But ये भी जो NCERT से directly आया है, not that it matters. I don't think it matters at all. ऋषभ, it's okay. हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो लिख चुके हो ना. You and I together -1 then on that one. And not -1, it's actually a -6, right? So instead of 200, it becomes 184, 194 then. That's the beauty about negative marking and getting it correct, especially in CUET. High stakes, huh? +5. -1 is not that high stake, but +5 is a very high stake. Khair. Okay. Very direct organic question. Zinc is reducing, so what you get directly is benzene. That's the first one right here. And all of them have nitro in it. Okay. But is it dinitro or is it meta? Like this is what we have to look at. Okay. One of these two. This is what I am thinking, gravitating towards. So finally यहाँ पे जो बन रहा है, which looks like an acid, is it ortho-para directing or is it meta directing? If it's ortho-para directing, it could be strongly directing or something. Or because बड़ा it could be para. So that's what we have to figure out. Essentially इस question में all you need to do is this orthopara or meta directive, which is ring activate कर रहा है, deactivate कर रहा है, and COH is a strong ring deactivator. Okay, so meta directing here answer should be D, but we can go through the motions. Okay, हम लोग इसको ध्यान से कर सकते हैं. ये बनता है, इससे टोलुइन बनता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है. टोलुइन बनने के बाद भाई साहब एसिड बन जाते हैं. एसिड बनने के बाद लास्ट स्टेप में नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज एट द मेटा स्टेट. ओके, आंसर शुड बी डी. या आंसर शुड बी डी. Easy one.
All right, let's go on to the next question. कितने सवाल बाकी हैं? अरे, we're almost at the end. Yeah, I think Rishabh, that has to do with some weird. So I applied a morph transition to this, and morph, I guess, just yeah. उस क्वेश्चन में थोड़े इक्वेशंस थे. Morph is a hit or a miss. कभी ज़्यादातर जगह काम करता है, but for edge cases it doesn't work. I don't think too many people use equations in PowerPoints, right? So they probably haven't optimized it for it. This question is not an NCRT. Okay. So this is the last question you can skip if you are doing the starred ones. Otherwise, 7, we are still very much in the ballpark of, doing it properly. Okay. The answer to this is to know the definition of what is the gold number. It's the amount of lyophilic colloid in milligram that prevents flocculation of 10 ml gold with 10% NaCl. तो जितनी छोटी वैल्यू उतना बेहतर प्रोटेक्टिव कोलॉइड. Answer is A with that definition. If you know the definition, there's no two ways about this. अगर definition नहीं मालूम है, then you're like, bro, what is this question? Hence I said it's very skippable. Flocculation मतलब coming together. Flocculation, coagulation is the same thing. Yeah? Oh wow, Shlok, thanks for that. +1 on this thing. Coming together. All right, next question. Reaction of, wow bro. Reaction of aniline with concentrated HNO3. I'm going to go with 8 or 11 now. We've gone into the territory of 11, so I'm going to keep it at 10 because you don't want to skip more than 10. But okay, in the spirit of honesty, let's do 8 or 11. This could be skipped, okay, because 47%. How are you supposed to guess this? See, is that straightforward? Oh, it's good. NCRT mein hai, okay. So which is why I'm not going to make it 8 actually. I'm going to make it 7 or 11. So another starred one, but 7, yeah, this should not be skipped. ये skip नहीं करना चाहिए. So 7 और अगर नहीं पढ़ा है life में तो 11. If you have not read it, then another one that you will have to skip. But look at this, ये NCRT में दिया हुआ है. Yeah, the deal is कि nitration of aluminium से हमको मेटा प्रोडक्ट भी मिल जाता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में एनिलीन प्रोटोनेट हो जाता है. Hence it forms an anilium ion. Similar to that AlCl3 वाला केस, उसमें लूज एसिड था, यहाँ पे डायरेक्टली एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl3. Hence it becomes meta directing. ठीक है, इसलिए 41.7% है. So since it's directly from NCRT, I'm going to put it as a star. So 7 or 11 there. Okay, this is direct. I don't think we have to spend too much effort on this. यहाँ पे electrons are not going to be available because they go into resonance, right? So this will be the least. और least में सिर्फ एक ही option है, which is B, and that's the answer. You don't think about this question. बिल्कुल सोचो ही मत. Interestingly, ये भी NCRT में है directly. Yeah, 7-11 special number. 7-11. 7-11 is the name of store, man. सातों दिन 11 घंटा जो खुला रहता है, ऋषभ. That's like, you've seen Apu in The Simpsons, right? That's where it got popular. That people run, what do you call it? 7 days a week, 11 hours a day. Stores are open. सुबह 9 से रात को 8 और सुबह 10 से रात को 9. States, United States का concept है. Anyway, B is the answer to this. These chaps are going to be, pushing electrons. 1 minute. Hold on. Something is fishy here. Oh, this is interesting. No, that was not that, Rishabh. Anyway, let's not talk about negative things. Hold on. This option is a little weird. This is C2H5 3N here, C2H5 whole twice N. Why is it that this is more basic than this? Is this a typo or is this an actual thing? Can you help me with that? What is happening here? मुझे बताएंगे आप? बताइए. What do you think? Please help me out with this one. Do your options look okay to you, or are all these options weird? Which question is this? This is question number 44. NCRT में क्या दिया है? NCRT में वही दिया है यार. Options तो सही लग रहे हैं. तो why is it that a secondary amine is more basic than a tertiary amine? सोच रहे हैं? अच्छा. Well, you can guess it because देखो, there's no way of getting this question wrong, but I'm just asking you. Perhaps steric hindrance or something, I don't know, that crowds it up, जिसकी वजह से electron, I don't know, नहीं निकल सकते. Think about it.
Next question. Almost at the end now. Which of the following compounds will give HVZ reaction? Alpha hydrogen किस पे है? That will give, इसमें है, इसमें नहीं है. That's the answer. One of those muggy things, right? Br2 or chlorine, red phosphorus, alpha halo carboxylic acids, right? इसमें है ही नहीं, बाकी में A is the answer. Yeah, very easy. Awesome. Organic ही बचा है अब तो. Increasing order of acidic strengths. This is very similar to that one. The only difference is that F should be in the forefront, but ये देखना है कि B और C में क्या होगा. Now, nitro group is going to be more electron pushing than the hydrogen group, right? I mean, then hydrogen, not hydrogen group, then a hydrogen atom. So, which is why the answer should be C. Again, a very direct question. Directly NCERT से है ये. Not directly NCERT, but this is a logical question, right? You have the logic right here. कि जो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ज़्यादा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड द रीजन वी ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, जो एनायन है वो स्टेबलाइज होना चाहिए, और यहाँ पे स्टेबलाइज तो वो इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी OH बॉन्ड की कम होनी चाहिए. इफ इट्स इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ दैट बॉन्ड, दैट्स नॉट गुड. ओके, विच इज वाई द आंसर शुड बी ऑप्शन सी ना, नॉट बी. स्निग्धा, ऋषभ, इसका सी होगा, राइट? वाई यू गाइस सेइंग बी? एक बार डू वांट टू चेक इट आउट फिर से. Ni2 माइनस को खींचेगा नहीं. What did push electrons? Oh, my bad. What is it between B and C then? मैंने confidently बोल दिया NO2, but NO2 is more than fluorine. Then in that case, should NO2 be the most? NO2 should be the highest, right? It should be D then, no? What is the answer to this one? Rishabh, Snigdha? If that's the case, the answer should be D, right? Not this, not this. According to NCERT, it should be D. What do you think? Yeah, it should be D, right? We'll fix that. We'll fix that in post. Answer of this one should be D. Thank you for piping in. This is not the answer. It is D, which is the right answer. All right, I've got 2 wrong now. So I've got 2 wrong, but we have skipped only 8 out of 10. No, we've done 7 or 11. That's a skipping thing. I've got 2 incorrect. Sob. Now we are at, oh my God, we were at 184. Oh, no, sorry, 194 and 180. Am I doing the math right? 6 वहाँ पे भी है, 6 188. Oh my God, we are back at 188. Looks like 188 is the score I'm going to be getting on this paper. Khair, increasing order the reactivity towards nucleophilic addition reactions. If SNAR नहीं होगा, then nucleophilic addition होना के chances ज़्यादा हैं, right? And this is again directly from NCERT. If you want to see, this is not substitution, okay? It's asking for nucleophilic addition reaction. ध्यान से करो, addition reaction की बात हो रही है. You had marked D. That's great, Rishabh. Lovely. 188. Excellent score. Excellent score. Yeah. Although, yeah, लज़मी है. लज़मी का मतलब मुझे नहीं मालूम है. इतनी हिंदी नहीं आती है भाई. खैर, here is the order, and the general idea is this. Yeah, कि this guy is going to make. हाँ, उर्दू है तो समझ में आया मुझे, but I have no idea what it means. Anyway, yeah. So what's the answer on this one? Yeah, acetophenone, para-tolualdehyde, acetophenone, this is C. Okay, cool. Let's go on to the next question. Last couple of questions left. Gattam and Koch reaction. Oh, this is interesting. This is a good question. This could go up to an 8 or 12 now. Yeah, we're going to the territory of skipping questions. 8 or 12. In fact, if you skip 12 questions, you would still get a higher score than I just did. You would get 190. I'm getting 188. Okay, if I do 48, 49, 50 correctly, that is. No, it would not. It will not be CO plus. It's going to be HCO plus. I'll show you. The actual reaction is CO, right? CO HCl के साथ. And this is fascinating. Hey, Snigdha, मैंने आपके साथ तो किया था. I think in one of those last sessions on NEET or was it on JEE? I don't remember. रिविजन सेशन में, ऑर्गेनिक के रिविजन सेशन में, आई थिंक हो सकता है जेई वाले चैनल पे मैंने किया था. व्हेन वी लुक्ड एट, हाँ, इट वाज प्रॉब्ली इन द जेई वाला थिंग, या वेयर वी लुक्ड एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट विल गिव
रिएक्शन टू फॉर्म क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड एक में फ्रील क्राफ्ट वाला था. आई रिमेंबर दैट क्वेश्चन, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट. एनीवे, द मेन आइडिया इज दैट दिस हैज a negative formal charge, this has a positive non formal charge, and hence HCl साथ react करके it gives you HCO plus, which is the nucleophile. This is the nucleophile. Okay, and ये Cl minus then interacts with AlCl3. Okay, that becomes AlCl4 minus. That's the reaction. We have done this in some detail. इसके बाद ये कैसे अटैक करता है, क्या करता है, we've done all of that. But अगर ये याद नहीं है, then it's okay, it's all right. The calculation of formal charge, you know, right? You know how to do this from chemical bonding. Please try this out and convince yourself that carbon and oxygen में, in carbon monoxide, carbon has a negative formal charge, hence it attacks the H and you get HCO plus. It's a nice question, it's a good question. Okay, next wala. I don't think this is in NCERT. Pranam ji, how are you doing? आ गया भाई, टाइम पास करने. Formaldehyde under Cannizzaro reaction happens because it has alpha hydrogen. Of course, it does not have alpha hydrogen. It doesn't have alpha group. Hydrogen कहाँ से होगा? It does not have alpha hydrogen atom. Okay, this sounds good. It does not undergo self oxidation. No, of course it does. That's what it does. So B and D, right? B and D should be the answer. Cannizzaro, right? क्योंकि ये दोनों oxidation और reduction साथ में करता है, right? This is something that we have done in our sessions. Answer should be B and D. And you see the same scheme जो बिल्कुल शुरुआत में था उसमें that was easier because if you have to select 3 correct, मतलब you have to select 1 incorrect. But if you have to select 2 correct, that is a little bit tricky. But these are again opposites. And these are again opposites. ठीक है? So you can eliminate stuff also. It does not have alpha hydrogen. Of course it does not. Right? It has. तो मतलब A नहीं होना चाहिए. So you have to pick between this and this. Right? Yeah? Absolutely. Yeah. All right. Next question. In the reaction CH3CO CH3 plus HI products CH3OH and CH3CI are the products and not these guys. It's because of what? This is an SN2 reaction for sure. Yeah. That is the main thing. Because this is not a assertion reason वाला question. मतलब it is definitely happening. अगर वो products दिए हैं CH3CI, अगर वो products दिए हैं, it must be SN2 reaction. SN2, no, sorry. What am I saying? Not SN2, SN1. It can't be SN2 because steric hindrance boss. उल्टा बोला मैंने. मेरे दिमाग में था cation, but मैं बोल रहा था SN2. Yeah, it cannot form CH3CI because SN2 में steric hindrance होगा, it will not form that. If it is forming CH3CI, then it must form the cation and it must undergo the SN1 mechanism. अगर ये SN1 mechanism कर रहा है, then there is a second step. Look at this. दोनों जगह बोल रहे हैं step 2. If there are 2 steps, then it must be SN1. That's a big hint right there. So you can eliminate option D right off the bat. Okay. अगर आप option D को eliminate करोगे, तो you have to pick between B and D. और by the way, ये snip क्या थी? Oh, good lord. Would you look at that? This is in NCERT. Directly in NCERT. Yes, Ashwini. I'm going to call you Ashwini. All right. Sweet. Yeah. Answer is B. Good job. Good job, Ashwini. Okay, we are done. End of slideshow. That was the end of things. And it took us about 1.5 hours to do this whole paper. मतलब 1.5 hours for me to explain it to you. And I think at the end we had 8 and 11, right? Keep. Discard नहीं करना है. देखो. Keep. Okay, I almost. Oh my god, dude. PowerPoint crashed. I remembered to keep the annotations and it's saying now there's a problem with PowerPoint and it crashed. Life is brilliant, isn't it? Oh God, man. देखते हैं, does it have annotations or is not? Oh my God, annotation हट गए फिर से. चलो अच्छा है, मैं already तैयारी करके आता हूँ, जो मेरे पहले लिखे हुए annotations से those are still going to be there on the paper. But yeah, you can see this, right? You can see my screen where none of the annotations are wonderfully there. Oh no. Khair, we are back at this colorful beginning and we are back here. मेरी screen दिख रही है, right? Yeah, that's been happening in the last 2-3 sessions. I have to figure this out. मैं कुछ और करूँगा जिसके this doesn't repeat. But yeah, broadly speaking, as a quick summary, this is what we had, right? And I think this number changed. बीच में जब हमारी बात हुई थी, श्लोक pointed out कि एक दो और सवाल थे, maybe here and here, you know,
इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एक दो और सवाल थे जो they were all from they were a lot more direct questions, but there were some interesting questions from CUET. So that was my analysis and a quick discussion all the chemistry questions. If you want me to do more of these sessions where I'm doing Comet K or Maharashtra CET or some other CET that you have a paper of, please, you know where to share it with me. Attached a comment here, there's pinned comment here, you can click on that, please send it over and I'll solve it. And the whole team will solve it. So I have shared biology, maths and physics papers also with my colleagues. They will soon also be doing this on the channels. Perhaps bio वाला नीट चैनल पे होगा, बाकी सब इसी चैनल पे होंगे. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. I'll see you all around. Have an awesome one. कल हम लोग मिलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एंड सॉल्यूशंस का लास्ट पार्ट के लिए. सॉल्यूशन लास्ट पार्ट ऑन द नीट चैनल, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑन द जेई चैनल. I'll see you around. Bye. Good night. See you around. Tata. Oh, by the way, if you guys want to join the Telegram and NEET channels, जो मेरे Telegram के NEET और JEE channels that are on there on the bento links, yeah, discussion groups. All right. Bye. Yes, Rishabh. Thank you. Good night. See you all. Tata.